Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about the life and achievements of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. In this video, we will learn about his early life, education, political struggle, role in the Pakistan movement, and his services for the Muslims of the subcontinent. We will also learn about his famous principles of unity, faith, and discipline. So let's start our topic and learn about the great leader who worked tirelessly for the creation of Pakistan. Let's begin. Think 100 times before you take a decision, but once that decision is taken, stand by it as one man. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कौल है कि किसी फैसले से पहले 100 बार सोचो, लेकिन जब फैसला कर लो तो फिर एक इंसान की तरह इस पर कायम रहो। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was the founder of Pakistan and one of the greatest leaders of the subcontinent. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी और बड़े सगीर के अजीम तरीन रहनुमाओं में से एक थे। He was a brave, honest and determined leader. He devoted his whole life to the struggle for the rights of the Muslims of the subcontinent. वो एक बहादुर, ईमानदार और पुरअज़म रहनुमा थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बरे सगीर के मुसलमानों के हकूक के लिए जदोजहद में गुजार दी। Muhammad Ali Jinnah was born on 25 December 1876 in Karachi. He received his early education in Karachi and later went to England to study law. Muhammad Ali Jinnah 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम कराची में हासिल की और फिर कानून की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। After completing his studies, he returned to India and started his career as a successful lawyer. He soon became an important political leader. तालीम मुकम्मल करने के बाद वो हिंदुस्तान यानी कि इंडिया वापस आए और एक कामयाब वकील के तौर पर अपना काम शुरू किया। जल्द ही वो एक अजीम सियासी रहनुमा भी बन गए। Quaid-e-Azam joined the All India Muslim League and worked for the political and social rights for the Muslims. Quaid-e-Azam ने All India Muslim League में शमूलियत इख्तियार की और मुसलमानों के सियासी और समाजी हकूक के लिए काम किया। He believed that Muslims of the subcontinent had their own religion, culture, traditions and way of life. उनका ख्याल था कि बरसगीर के मुसलमानों का अपना मजहब, सकाफत, रवायात और तर्ज जिंदगी है। Therefore, they needed a separate homeland where they could live according to their values. इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना बहुत ज़रूरी है जहां वो अपनी इक़्तिदार के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। With his strong leadership and determination, Jinnah united the Muslims under the banner of the Muslim League. कायद-ए-आज़म ने अपनी मजबूत क़यादत और अज़म से मुसलमानों को मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। The Lahore Resolution of 1940 became an important milestone in the Pakistan movement. He worked tirelessly and faced many difficulties, but he never lost hope. 1940 की करारदारे लाहौर तहरीक पाकिस्तान का एक अहम मरहला साबित हुई। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के हसूल के लिए बहुत मेहनत की और कई मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। His efforts finally became successful and Pakistan came into existence on 14th August 1947. उनकी कोशिशें कामयाब हुईं और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बन गया। Quaid-e-Azam became the first Governor General of Pakistan. He advised the people to remain united, work honestly and serve their country with dedication. Quaid-e-Azam पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को इत्तेहाद, ईमानदारी और मेहनत के साथ मुल्क की खिदमत करने की नसीहत की। Quaid-e-Azam believed in the principles of unity, faith and discipline. He wanted Pakistan to become a peaceful, strong and prosperous country. कायद-ए-आज़म के मशहूर असूल इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक मजबूत, पुरअमन और खुशहाल मुल्क बने। He also emphasized equality, justice, education and the rule of law.
وہ انصاف، تعلیم اور قانون کی حکمرانی کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے۔ قائد اعظم passed away on 11 September 1948. His death was a great loss for the newly created country. However, his services, sacrifices, and leadership will always be remembered. قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ ان کی وفات نئے بننے والے پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان تھی، لیکن ان کی خدمات، قربانیاں اور عظیم قیادت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ In conclusion, قائد اعظم محمد علی جناح was a great leader and a true hero of Pakistan. His life teaches us the values of honesty, determination, unity, and hard work. We should follow his principles and work sincerely for the progress and prosperity of Pakistan. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے عظیم بانی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے کے لیے بہت محنت اور جدوجہد کی۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے اتحاد قائم کیا اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان حاصل کیا۔ ہمیں قائد اعظم کی زندگی سے ایمانداری، اتحاد، نظم و ضبط، محنت اور عزم کا سبق ملتا ہے۔ ہمیں ان کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ So viewers, this was our short video for today. I hope so you have understood it well. Please subscribe to my YouTube channel so you can learn about our next topic. Till then, take care. Allah Hafiz.